Hello everybody, welcome to the channel. So I'm giving SBI PO exam this year and my prelims is on 1st of August. So I am starting this series of documenting my SBI PO journey on this very YouTube channel. So if you guys are interested, do connect with me and be with me in my lows and highs. Look for what you can add to your journey from mine and also suggest me what all corrections I can make in my preparation strategies. So thank you so much if you're still listening to me, and do watch me attempting this test. Although this test didn't go well because I was feeling really sleepy after having the lunch, I attempted this test. So then also you can learn something or you can add something to my preparation, to my attempting strategy. So do watch, do attempt the questions, and do let me know what you think about the test. And yes, also not forgetting to mention that I don't want to be fake on this YouTube channel. I don't want to show only my highs, only my 90-95 percentiles. I have attempted 3 tests before this. I got above 90 percentile, that is 91 percentile and 97 percentile in 2 of my tests. Third test again went bad because somebody disturbed me in between, and it was a live test. It can't be stopped. So 5 minutes of mine were spoiled in that. So I couldn't achieve that good. And in this one also I was feeling very sleepy. So from these 2 tests, the last 2 tests, you will get to know that how can a day, a bad day can make your exam go bad. So this is all you have to learn, that you don't need to get affected by due to sleepiness or due to some noises coming from around the corner. So you need to ignore all of that and you need to just focus on your test. So 2 tests went well, 2 tests went bad because of some disturbances, but then also I am being true to my journey and I'm trying to upload each and everything I am attempting for this preparation. So do watch. ये पैसेज हम बाद में करेंगे. ओके, तो उसमें हमें एरर ढूंढनी, राइट. The news were damaging for the government. Which department, agriculture, finance, played the lead role in the scam? Was anyone's guess. D में error है, 1 के D में error दिख रहा है मुझे. Role in the scam was anyone's guess. 1 के A में भी error दिख रहा है. Okay, the economic damage of the lockdown is still being assessed. According to reports, our GDP is likely to be less than that of Bangladesh. The artist stood on the street with a sad smile, yet his eyes shone bright. The tunes he played on the bellows was almost perfect. नहीं, 3 के D में भी were almost perfect होगा ना. 3 के D में भी error है. 1 के A में, 3 के D में. चलो ये वाले क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा तो थोड़ा आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं. इसमें भी एरर ढूंढना, ठीक है. Not only did the geologist identify several new mineral deposits, but also an underground aquifer of significant volume. The reason for the massive power outage across the coast was because aging transformers failed during the storm. Maintenance crews are still working on repairs. The reason for the massive power outage across the coast was because, ठीक नहीं लग रहा, ई में नहीं, डी में एरर है. एक मिनट, ए का, बी का, सी का, ठीक है. डी में एरर दिख रहा है. डी के साथ बी और ए को चेक कर लेते हैं. नॉट ओनली डिड द जियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई, जियोलॉजिस्ट होगा ना, EMD, I guess. Geologist identify several new mineral deposits were also in underground aquifer of significant volume. Okay. Next is each of the candidates who applied for the executive position are required to undergo. Each of the candidate is the one is required to undergo. B में error है, B के साथ C आ रहा है, C में और चेक कर लेते हैं. Is required to undergo series of rigorous psychological assessments. The criteria for selection is based on both. The criteria for selection are, ठीक है, सही है. C. Every one of the employees who was interviewed for the study, every one of the employees, each one of the employees होगा. ये में error दिख रहा है कि सब B and C, okay. Interviewed for the study were found to be suffering from moderate levels of burnout. It is recommended that the management reduces working hours to improve overall productivity. Employees' well-being must be a priority. Okay. I find error in A and B. Environmental pollution has become a major issue across the world today. Major problem has become a major problem across the world today. Rapid industrial growth and urbanization have added significantly to the problem. Caused significantly to the problem? No. Led significantly to the problem. Forests are being cut down at an alarming rate, leading a loss of biodiversity and severe climate shifts.
Severe climate shift. Similarly, excessive use of plastic products has dashed the situation further, intensified the situation further, increased, worsened the situation further. Okay, if strict measures are not taken soon, future generations will have to face serious environmental consequences, environmental repercussions. Therefore, it is the duty of every citizen to save natural resources, okay, to conserve natural resources for sustainable future. Okay, experiencing the ups and downs of life events may lead young adults to think about the world in novel and often less rigid ways. Okay, I find A is suitable with F, A and F. Let's check for B and D. More women than men attend college, and the proportion of women relative to men is increasing. Okay, during early adulthood, we begin to perceive. C का तो नहीं सही है, चलो. Miss Paul herself noted is appreciating. No. Herself noted that appreciating dyslexia as a gift is unhelpful at best and patronizing at worst. Patients convalescing का मतलब क्या होता है पता नहीं. Convalescing to pneumonia were evacuated to England or given base duty. Convalescing from pneumonia. ओके, ये पैसेज है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आगे चलते हैं. छोटे क्वेश्चंस पहले करेंगे. ओके, ये अरेंजमेंट है. लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट. सब में ABCD, सब में सबसे बिगिन हो रहा है, तो हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस पहले आएगा. The implementation of renewable energy requires, let's go for B, requires substantial initial investments, deterring many developing economies from abandoning traditional possible despite long-term environmental benefits. Requires से शुरू नहीं हो सकता. C, from से भी शुरू नहीं हो सकता. D, deterring many developing economies. No. E से despite long-term environmental benefits, the implementation of renewable energy from abandoning traditional fossil fuels requires substantial initial investments, deterring many developing. Okay, ये सही लग रहा है. सबसे ज़्यादा ऑप्शन शुरू हो रहे हैं A से चेक करते हैं. रैपिड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग नेशंस often results in inadequate infrastructure, leaving marginalized communities vulnerable to environmental hazards and poor health outcomes. ठीक है. Then deleterious. Smoking tobacco is known to have deleterious impact on lung capacity. The deleterious vitamins cured his illness and made him feel fantastic. Prolonged exposure to toxic chemicals highly deleterious to human health. Okay, I find A and C are correct. Correct है बताना ना. ठीक है. Candid. The candid interview revealed that his honest struggles true. He was candid about his mistakes, hiding nothing. Okay, candid जो होता है मतलब ऑटोमेटिक कोई चीज़ नेचुरल जो होती है, जैसे कैंडिड फोटो होती है. डिसेप्टिव पॉलिटिशियन gave a candid response composed entirely of proven lies. Okay, I find all of them are correct. Ebullient, I don't know what is the meaning of ebullient. The ebullient child bounced around the room after finding out they were going to Disneyland. Okay, ebullient child. Maybe naughty child or very excited child. He was completely ebullient, sobbing quietly in the corner over his lost pet. Okay, दुखी child होता होगा ebullient का मतलब. The teen's ebullient reaction to winning the championship was broadcast on live television. Okay, जो रेजोनेट कर रहे हैं वो A और C रेजोनेट कर रहे हैं. B जो है वो दुखी वाला एक इंप्रेशन दिखा रहा है, और A और C जो है, पर हमारे ऑप्शन मतलब 2 और 3 में से कुछ हो सकता है, क्योंकि ओनली 2 भी हो सकता है, एबिलेंट हो सकता है, कुछ सैड मीनिंग हो सकता है. 1 A and C कुछ हो भी सकता है, तो इसको अभी के लिए हम छोड़ देंगे. Routine maintenance of industrial machinery is imperative to prevent catastrophic operational failures, ensuring uninterrupted mechanical efficiency and maximizing workplace safety. Okay, I find no interchange required, ensuring uninterrupted. We can change B and C. The dramatic melting of polar ice caps is a severe indicator of global climate change, threatening to inundate coastal cities and displace vulnerable populations. Sorry, no interchange required. Integrating interactive multimedia into the educational environment can significantly boost student engagement, fostering a dynamic and immersive learning curriculum. Integrating interactive multimedia into the educational curriculum. A and D should be interchanged. She had dashed herself to never seeing him again. She had pretended herself. Reconciled. She had carried herself. She had melted, divided. No. After 2 years of not speaking to another, the two brothers are finally reconciled.
Okay, I have devoted myself to knowledge, while you prefer dash things like prose, rhythm, and meter. Okay, these all words are really difficult. Sanguine. Sanguine I feel कोई experience holder होता है, ethical experience holder kind of sanguine, genuine kind of. It is true that one can scan a whole evening's programs and find only dash junk on every channel. Okay, I cannot do this one. I don't know the meaning of the words. Let's go for passage. The release of 11 convicts sentenced to life for the heinous murder of 7 people and gang rape of 3 women during the Gujarat communal pogrom of 2002 is a questionable decision of the state. On the face of it, it appears to be illegal as their terms seem to have been remitted. Okay. As their terms seem to have been remitted without the required consultation with the Indian government, defies logic that those convicted for direct involvement in the rape of 3 women, the murder of a 3-year-old, 6 others to be considered candidates of premature release under any remission policy. One of the convicts had obtained an order from the Supreme Court in May, under which Gujarat, the state in which the crime occurred, was held to be the appropriate government to consider his premature release. The court had asked the state to decide the application under its 1992 remission policy, as it was the relevant one on the date of conviction 2008. However, it is difficult to thread this as a waiver of the requirement under Section 435 of the Code of Criminal Procedure, which makes consultation with the centre mandatory. Further, the Constitution Bench in 2015 held that consultation meant concurrence in this provision. The remission also runs contrary to the spirit of contemporary thinking on treating crimes against women and children, especially rape combined with murders, as so heinous that the perpetrator should not be considered for remission. It is not clear if the committee that recommended remission had considered the disquieting effect of the release of these prisoners might have on the survivors and other members of the affected community. A life normally means that a convict has to spend his natural life in prison. The CRPC does permit premature release in the form of remission and commutation, but it should be based on legal and constitutional scheme and not on rulers' whimsy. The power of remission has been conferred on the union and state governments apart from the sovereign power of clemency enjoyed by the president government, so that it can be used to temper the law's rigors with an element of grace, while the benefit of remission ought not to be denied or to anyone without a ray of hope that they will be free one day. It is the power to be exercised with discretion and wisdom. Further, any decision on remission should be linked dash the convict's expression of regret and some promise to reform. It would be unjustified if given the political considerations merely because of elapsing of the minimum number of years they have to serve with an assembly elections due in Gujarat in the end of the year. It is difficult not to read political significance into the decision. The sight of the released convicts being greeted and feted on their release will not sit easily on the country's conscience. ओके, तो सेंट्रल थीम क्या है इसका? सेंट्रल थीम ये है कि 2002 में जो एक 11 कॉन्विक्ट्स को सेंटेंस टू लाइफ किया गया था फॉर द हीनियस क्राइम जो था, 7 लोगों को मारा था, गैंग रेप हुआ था अगेंस्ट 3 women, तो उसके लिए 7 कन्विक्ट्स को लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था। उसके ऊपर पूरी बातें हो रही हैं कि उनको रिमिशन का चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर सेंट्रल थीम क्या है? जस्टिस टू द 11 कन्विक्ट्स, ओके, लाइफ टू द life sentence to live, the ban of premature release in the form of remission. Premature release of prisoners must be done or with wisdom. Justice to the gang rape victims, okay. They cannot be banned on premature release in the form of remission. Premature release of prisoners must be done with wisdom. Okay, let's say this is the theme. Incorrect. CRPC strictly prohibits premature release in the form of remission or यहाँ पे लिखा था the CRPC does permit premature release in the form of remission commutation, but it should be based on legal and constitutional scheme, not on rules whimsy. Okay, the CRPC strictly it does not prohibit. A life sentence means punishment by execution. Yes, convicts sentenced to life for heinous murder and gang rape are extricated. What does extricated mean? Not sure about it. The first one is incorrect. According to passage, what does a life sentence normally means? A death penalty for the convict. Not death penalty. It is a jail term for the entire life of the convict. ओके, 1 इज इनकरेक्ट। इसमें हम क्यों बता पा रहे हैं? अगर हमें एक्सट्रीकेटेड का मतलब भी नहीं पता तो भी हमारे पास ए और सी का ऑप्शन है ही नहीं, तो बी सी मतलब करेक्ट है। सेंटेंस टू लाइफ, ठीक है, ये तीनों सही जा रहे हैं। ओके, फर्दर एनी डिसीजन ऑन रिमिशन शुड बी लिंक्ड टू द कन्विक्ट्स एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ठीक है। One of the convict had obtained an order from the Supreme Court in May, under which Gujarat, the state in which the crime occurred, was held to be
was held to be the appropriate government to consider his premature release. Has obtained an order from the Supreme Court under which the state in which the crime occurred was held to be the appropriate government to consider his premature release. On what subject? The state of being of one opinion about something. Concurrence. Convicted. Synonym convicted. Condemned. Antonym of the heinous. Abominable. Innocuous. Wicked. Heinous मतलब खतरनाक होता है ना. Odious. Atrocious भी खतरनाक होता है. Abominable. Wicked. Innocuous. Abominable, I guess, the antonym of the word. Meaning of the word, not sit easily. कहाँ है ये idiom? Not sit easily. To not feel easy in a particular position or state. To not be acceptable to someone. Okay, the sight of released convicts being greeted and feted on their release will not sit easily on the country's conscience. Causing or feeling slight pain or physical discomfort. Not able to sit, lying, feeling or causing worry or embarrassment. Not to be acceptable to someone. Meaning of the on the face of it. Something on the face of someone. To confront and deal with or accept difficult or unpleasant tasks. Act situated to position with the face front towards seemingly available evidence and expression shown on the face. ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए वैसे इसके. Okay, this was an easy one. I guess I should have done it. It is one of the later. Okay, the world has become global village thanks to the invention because in ancient times before the invention of the wheel. Okay, it should start with B. Invention of the wheel. It was a man in solitary workload. The world has become global village thanks to invention. We can cover long distance short period of time. Okay, वो गलत हो गया B वाला. A car travels P to Q travel कर रहा है with the speed x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, and then from Q to R travel कर रहा है x by 2 with the average speed of the entire trip is 24. Entire उसकी 24 and distance from P to Q is 240 and the value of 2x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ओके, एवरेज स्पीड 24 है. 20/24 10 और ये हो जाएगा 5. ये टाइम आ गया है ना. तो ये 48 आ जाएगा. x into x by 2 upon x plus x by 2 is equals to 24. ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस x 2 इज इक्वल्स टू 24. ये 12 हो जाएगा. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x. तो 36x x कट गया तो x की वैल्यू 36 आ गई. तो 2x की वैल्यू 72 आएगी. ठीक है, चलो ये डी बाद में करेंगे. ये अरिथमेटिक पहले सिंप्लीफिकेशन और डिवाइड करेंगे. 12 into 14 कितना होता है? 120 और 48 168 160 माइनस करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा. x स्क्वायर प्लस 4/5 करेंगे इसका 61 52 का इज इक्वल्स टू 10 13 आ जाएगा. 13 4 आ जाएगा. 4 से 4 x स्क्वायर प्लस 1 x की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है, 20% में 25 5 of x is equals to 42 the 80 plus 90 19 आ जाएगी इसकी वैल्यू. नो 18 आ जाएगी. 18 5 से 90 होता है ना. ठीक है, 225 प्लस ये आ जाएगा 62 तो हो जाएगा 287 प्लस 9 की पावर x और ये 324 माइनस 10 करेंगे तो 314 आ जाएगा. 314 से 287 माइनस करेंगे 7 227 डिवाइडेड बाय 9 तो 3 आ जाएगा. 27 और 9 की पावर x 2x और 3 की पावर 3 तो 3/2 आ जाएगा ये. ठीक है, अब 100 ऑफ 36 ऑफ 4 36 ओके 10 into 6 into 2 आ जाएगा 120 200 इज इक्वल्स टू x% x upon 100 60 आ जाएगा ये. ठीक है, रमेश एंड सुरेश टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 6 days while सुरेश अलोन टेक्स 12 days टू कंप्लीट. ओके, रमेश एंड सुरेश दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 6 दिन में कर ले रहे हैं. सुरेश अकेला 12 दिन में करता है. दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days सुरेश लीव्स द वर्क.
तो रमेश एंड सुरेश दोनों की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days दे लीव द वर्क। ओके, 4 काम कर चुके हैं, सुरेश लीव कर देता है, रमेश कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क अलोन। तो रमेश बचा काम अकेला करता है। फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क। ओके, तो एक्स को फिर 8 दिन लगते हैं फिर रमेश को, 8 और 4 12, ठीक है। ये क्या दिया दे रखा है ऑन पाई चार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेंस सोल्ड इन 5 डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेंस सोल्ड ऑन ऑल 5 days टुगेदर विद, ठीक है। 18,000 टोटल हेंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑन ईच डे। फर्स्ट 400 हेंस फॉर, पहली 400 हेंस सोल्ड करी जाती है 35 पे, और रेस्ट हेंस फॉर सोल्ड एट डिफरेंट रेट विच मे और मे नॉट बी द सेम ऑन ईच डे, ठीक है। फर्स्ट 400, ओके। तो हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। तो 18 3,240 मंडे को, ट्यूसडे को 12 इंटू 18 120 और 12 8 96 6 216 2160, फिर 28 इंटू 18 280 और 4 6 16 एंड 6 22, तो 4015045040। देन 18 इंटू 22, 18 टू 36 होता है, 36 11 10 होता है, 396 3960 और 20% हो जाएगा 3600, ठीक है जी। ऑन वेंसडे each hen excluding the first 400 hens were sold at rupees, find the total amount collected Wednesday from selling the hens, ओके। वेंसडे की बात हो रही है, वेंसडे में 5040 hens है, 5040 में से 400 हटा देंगे तो 04 और ये आ जाएगा 46। इनको 20 के भाव बेचा गया है और 400 हेंस को 35 के भाव बेचा गया। टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, 008 12 219 और 35 चौके कितना होता है 140, 140 और 200008 6 और 106800, ये आ जाएगा इसका टोटल। फाइंड द एवरेज हेंस सोल्ड ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो 000 11 and 6 17 18 8 1 and 10 108, अच्छा एवरेज निकालना डिवाइड बाय 3, 3600 आ जाएगा, ठीक है। इफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग हेंस ऑन मंडे इज 3300 व्हिच इज 10% मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे, ओके। पहली जो 400 हेंस हैं वो तो 14,000 में बिक जाएंगी, बचेंगे कितने मंडे को, 400 हटा देंगे तो 0 4 12 8 एंड 2840 बच जाएंगे, ठीक है। तो हम 33,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो आएगा 19,000। तो हमने 19,000 में बाकी बची हुई 2840 हेंस बेची हैं, ओके। 2 10 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 4 2 5 10 एंड 0, ओके। अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स हमने बेची हैं, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। विच इज 10% मोर देन दैट ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ ईच हैन ऑन ट्यूसडे एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 400 हेंस, ओके। 10% मोर है, तो 1 रुपये की बेची है। 2160 minus 400 0671, average price of each hen, let's see. On Friday the amount collected by selling first 400 hens is rupees 1160, Friday का तो दे रखा है इसमें, less than by selling rest number of hens, okay. Find the price of each hen excluding the first 400 hens, okay। first 400 hens obviously 14,000 की बिकनी चाहिए थी 35 के भाव से, पर ये 11600 लेस बिकी हैं बाकी की उससे। तो बाकी की जो हेंस हैं फ्राइडे की 3600 में से 432 हेंस जो हैं वो बिकी हैं 25600 के रेट से। तो 16 16 16 दूनी 8 8 रुपये पर हेन बिकी है। द प्राइस ऑफ ईच हेन 8 रुपये पर हेन बिकी है, ठीक है। इन ईच ऑफ द गिवन डेज 5 days ईच ऑफ द हेन्स एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 408 रुपीज़ 8 पे बेची गई हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन द गिवन फ्राइडे एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 4 ऑन ईच डे, ठीक है जी। इन सबका टोटल कर लेते हैं। 0 14 14 26 2 5 5 और 9 14 14 और 26 1 2 5 7 7 5 12 12 एंड 6 18,000 में से हम सब में से 400 हटा रहे हैं, है ना। तो 2,000 हटा देंगे, 16,000 को 8 के भाव बेचेंगे तो 128,000 पे बिकेंगे सब, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ x minus y, ये 2x है, ठीक है। द बोट टुक 18 आवर्स इन टोटल टू कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम कवर किया 2x से और डाउनस्ट्रीम कवर किया टोटल टू कवर 120, ओके। डाउनस्ट्रीम कवर किया, y की वैल्यू इसमें हो जाएगी x minus 2x और x की वैल्यू है 3x, तो x plus x 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 18, 240 अपॉन 2x इक्वल्स टू 18
Find the distance of a boat in downstream in 6 hours. Downstream in 6 hours. तो x अगर 40/6 आ गया तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी 20 और x माइनस वाई 2x है. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 2x. नहीं, बड़ा इजी सा. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन दैट. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3z लिख लेते हैं. अपस्ट्रीम स्पीड जो होती है x माइनस वाई होती है, हो जाएगी 2z. ठीक है. द बोट कवर्स 120. अपस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो वो भी x प्लस वाई होगी. x की वैल्यू 3z है और y की वैल्यू हम ले आएंगे यहाँ पे x माइनस 2z. डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी 3z. छोड़ो यार, दिमाग लगा दिया फालतू का. ओके, नंबर ऑफ कूपन्स ठीक है 500. शो द नंबर ऑफ कूपन्स ऑफ ₹500. ठीक है. एंड परसेंटेज नंबर ऑफ कूपन्स ऑफ ₹1000 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कूपन्स. ओके, ठीक है. अब शॉपिंग ऐप क्या है? मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अजियो है. ठीक है. इसमें 500 के कूपन्स कितने हैं? 15, 16, 21, 24 एंड 18. और परसेंटेज 1000 के कूपन्स आउट ऑफ टोटल है ना 40%. 40% 1000 के तो 60% 500 के होंगे. तो 60% 500 के अगर 15 हैं तो ये 1000 के 10 हो जाएंगे. ठीक है. 50-50 तो 16 हो जाएंगे. 25% तो 75% 21 है. 75% 21 है तो 25% ये 7 हो जाएंगे. अगर 40% 24 है, 40 इंटू 60 ये 36 हो जाएंगे. और अगर 25% 18 है तो 75% 54 हो जाएंगे. ठीक है. डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ कूपन्स ऑफ अजियो एंड फ्लिपकार्ट. टोटल फ्रॉम अजियो एंड फ्लिपकार्ट. अजियो में टोटल कितने हैं? अजियो में टोटल है 172. इसमें टोटल है 60. इसमें टोटल है 28. इसमें टोटल 32. इसमें टोटल 25. इसका पूछा अजियो एंड फ्लिपकार्ट का. फ्लिपकार्ट में 28 और ये तो हम डिफरेंस निकालना है. सॉरी 72 माइनस 28 कितना होता है 444. ठीक है. नंबर ऑफ कूपन्स ऑफ 500 इन अजियो. 500 is Ajio. How much percent less than the number of coupons of 100 in Myntra? Of 100 in Myntra 60. 60 कितना लेस है? 70%. 14 बचे तो 70 होता है. पैंसठ %. 65 भी नहीं है. 14 3 42. 14 3